Narayan. Good evening, kids. Today we are going to discuss the January 29 January shift 1, the morning paper. The paper is physics is easy, and the other subjects they'll come under category chemistry easy, and maths is moderate and little bit lengthy and all. So the overall for 99 percentile आपको यहाँ पे around 165 to 70 marks कुछ score करना पड़ेगा. The physics is compared to the yesterday's paper, two papers 28. This is relatively formula based. Like a अच्छा score भी हुआ होगा सभी का. Okay, we'll discuss the paper. Good evening, Bacho. We are going to discuss the JEE Mains 2025, the 29th shift 1 morning, January morning shift. Your Sridhar sir, physics teacher. Once again, thank you everyone for great support. So the paper is, anyway, we are going to discuss paper. So let me summarize. The paper is easy and formula based related to physics. And overall total, if you get around 165 marks, it will be 99 percentile. The total. So in the paper as easy and formula based. Tomorrow again, like shifts are there. Last two shifts are there. Let this be formula based so that the maximum students को benefit हो जाएगा. So again the same strategy. The JEE Mains like बाकी दो shift छोड़ के जो भी अब तक shift में जो पूछे like it's all about the basic concepts and formulas. जब तक आपको आप रिवाइज नहीं करोगे सो आप पढ़ोगे नहीं बिना लके फॉर्मूलास याद नहीं करोगे सो द पेपर विल बी डिफिकल्ट. अगर आप लके पढ़ोगे जस्ट आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है, रीड इट, फॉर्मूलास याद करो, देन ऑटोमेटिकली वे यू सॉल्व PYQ जब जाके एग्जाम जाको यू विल बी वेरी कन्वीनियंट. ओके, विल स्टार्ट द पेपर. पहला क्वेश्चन ले लेंगे. This question is about the simple pendulum. Collisions, a little bit. So the question is based on the collisions. The name of chapter will be chapter name collisions and vertical suppression. Both are combined. A pendulum of mass m/2 is released from the given situation. Find the speed of another pendulum after collision. यहाँ पे दो pendulum है. So there's a pendulum इसका mass m/2 है और दूसरा वाला pendulum इसका mass m है. So now इसका number दे देंगे. A वाला 1, 2. This is released from rest, and this is also at rest. So this pendulum, it happens like this. This will swing and collide. कोलाइड होने के पर जो पेंडुलम येलो कलर का वो यहीं पे रहता है. ग्रीन कलर का पेंडुलम ऐसे स्विंग हो जाता है. इट्स आस्किंग ओनली आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द कोलिजन ऑफ दिस द सेकंड पेंडुलम. सो वी आर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट, इट विल स्विंग लाइक दिस, कम कोलाइड. कोलिजन होने के बाद दिस विल स्टार्ट स्विंगिंग लाइक दिस. विल ड्रॉ द सम डायग्राम्स. यहाँ पे सेट ऑफ डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. पहले वाला पेंडुलम, दिस इज at rest. Both are suspended from same point. Here little bit for me. Both are suspended actually from same point. A वाला first pendulum m/2, m/2. बाद में जब collision होता है थोड़ा diagram. So let me draw the diagrams. It will be easy for you. एक collision होने के बाद इसका velocities पूछ रहे हैं. So we like sir इसका time period कुछ भी नहीं, just only after collision. A वाला इसका mass कितना m/2, and this one, this is 1, this is 2, this is at rest. अभी भी ये रेस्ट में रहता है. इसका मास कितना है m/2. थोड़ा निप का साइज इंक्रीज कर लेता हूं. देन कितना हाइट डिसेंड होता है. सो दिस विल बी L.
ए लेंथ तो एल कॉस थीटा हुआ, टोटल लेंथ तो एल। सो व्हेन इट अराइव्स हियर, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होता है, u1। Oh, value of u1 will find out. So the decrease in potential energy m by 2 g l, l is the length of pendulum, is equal to, there's a quotient of restitution is e, is equal to m by 2 g l 1 minus cos 60 degree. What is this? Decrease in potential energy is equal to increase in gravitational, यहाँ पे थोड़ा mgl by 2 equal to m by 2 half m by 2 u1 square. What is this? ये जो पेंडुलम वन है, तो जब लगे नीचे आता है, सो व्हेन इट बिकम्स स्ट्रिंग्स बिकम्स वर्टिकल, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और इसका वेलोसिटी यहाँ पे जब नीचे आता है कितना, वेलोसिटी विल बी u1। सो इसको हम m by 2 कैंसल हो जाएगा, सो 2gl cos 60 का वैल्यू 1 by 2, सो u1 स्क्वायर। सो इसका u1 वैल्यू कितना है, √gl। नाउ इसका मास कितना है, m। दूसरा सेकेंड वाला का पेंडुलम, उसका मास कितना है, m है। दोनों इलास्टिक कोलिजन कोलाइट, बाद में जब कोलिजन होने के बाद कितना वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी v1 v2। स्पीड ऑफ अंदर पेंडुलम आफ्टर कोलिजन, तो हमें तो वेलोसिटी पता है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ओके सर, बट यहाँ पे तो टेंशन रहेगा, देन ड्यू टू कोलिजन आप वो टेंशन क्या करेंगे, द टेंशन इज एक्टिंग perpendicular to the line of impact. So there's no necessity of anything about the tension here, because we are going to conserve momentum along line of impact. Then what is the contribution of the impulse due to tension will be zero. So therefore still we can conserve momentum along line of impact. यहाँ पे impulsive tension रहे तो भी okay, it will act perpendicular to line of impact. So therefore we can conserve momentum along x-axis. So applying conservation of momentum, m by 2 u1 equal to m by 2 after collision velocity v1 minus m2 v1 plus mv2. So u1 equal to v1 plus 2v2, and it's an elastic collision, E equal to, this direction will take it positive, v2 minus of minus v1 by u1 minus 0. यहाँ पे 0 क्यों है, because it is at rest initially. And what is the value of E? E is equal to 1. 1 equal to v2 plus v1 by u1. So v2 plus v1 equal to u1. A वाला equation 2 and this one equation 1. यहाँ पे ले लेंगे. Now this is the, we'll add up these two, adding 192. Adding 192 to u1 is equal to 3v2, or v2 equal to 2u by 3, 2u1 by 3. इसका वैल्यू u1 का वैल्यू कितना है, √gl। सो ये वाला हमारा आंसर है, is based on the collisions and vertical circular motion. So the two ideas are being asked in this particular question. ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके टीचर में नोट्स में रहेगा। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। सर आप वही बोलते लगे टीचर नोट्स, यस टीचर नोट्स 2 साल आप उसी नोट्स से पढ़ के आए हो ना। अगर वही नोट्स को आप दोबारा रिपोर्ट करोगे
So it'll be more beneficial, no? This is the main advantage for the exams. बल्कि आप ओ ये मटेरियल से आपका टीचर नोट्स ज्यादा पढ़ो, उसको रिवाइज करो, रियली हेल्पफुल। किस कौन सा भी टीचर आप जहाँ पे कोचिंग या ऑनलाइन या खुद से पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स बनाते हो 2 साल में, उसी को बार बार रिवीजन करने से क्या है कि आपका प्रिपरेशन विल बिकम वेरी स्ट्रांग, आपका एंड क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट विल इंप्रूव। इससे क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चन इजीली मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, यू हैव टू इंटरलिंक, नो? हाँ, ओके, यहाँ से यहाँ दो पेंडुलम का कोलिजन कुछ ऐसे पढ़ा था, और दैट वाज आइडिया, कोलिजन्स का आइडिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आइडिया। तो जो भी पढ़ते हो उसी से लिंक करके सॉल्व करना पड़ता है। तो जो भी आप पढ़ते हो याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस थिंग्स इन एग्जाम। मैं ये नहीं बोल रहा मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, बट कोलिजन्स का आइडिया आपको पता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का आपको आइडिया पता है, तो अगर वो जो आइडियाज यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो देयरफॉर द रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स लॉजिक गेट्स। यहाँ पे इक्विवेलेंट गेट पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पे इनपुट ए है, बी है, तो इस आई थिंक ड्राइंग द राइटिंग इक्वेशंस। यहाँ पे हम इक्वेशंस ऐसे स्टार्ट करेंगे, ए बी, दिस इज 9 गेट। I'll increase the dimension. Okay, I think now it's visible. ये वाला तो 9 गेट है, this is the 9 गेट। देन यहाँ पे इनपुट ए बी, दिस इज द नॉर गेट, नॉर 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 बोलते, और बाद में ए वाला 9 गेट है। यहाँ पे आउटपुट कितना होगा, ए बी डॉट, यहाँ पे आउटपुट कितना होगा, ए प्लस बी, आउटपुट सी। सी व्हाट वी शुड राइट, दिस विल बिकम वन इनपुट, ए बी डॉट ए प्लस बी होल कॉम, दिस इज वन इनपुट। और बेटर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको यहाँ पे एक्स डाल दो, यहाँ पे वाई डाल दो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नैन गेट, एक्स डॉट वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, a plus b whole complement. De Morgan's theorem, the complement of dots should be equal to sum of individual complements, a b double complement plus a plus b double complement. This one ab plus ab, यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे, b plus 1 plus b plus 1, b either 0 or 1, the output will be 1 only. So therefore this will further get simplified, will become a plus b. What is a plus b? C quote a plus b means it should be OR gate. ये जो gate है, this everything we can replace, it is simple equal to 1 OR gate. ट्रूथ टेबल से आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, ट्रूथ टेबल, बिकॉज अरे का इनपुट वेरीफाई करना पड़ता है। बेटर टू यूज दिस मेथड, आप एक बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ से सॉल्व कर लो और डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लो। दिस आर कॉल्ड एज ए डी मॉर्गन्स थ्योरम। दो थ्योरम्स है, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। बाकी आपको नैन गेट टाइन गेट तो भी पता है। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, based on logic gates semiconductors. The topic is logic gates semiconductors. This is the topic based on the photoelectric effect. Then the graph between incident light, kinetic energy of photoelectrons in the photoelectric effect, kinetic energy of the incident electrons.
the graph between wavelength of kinetic range of incident electrons, K max equal to SC by lambda minus work function. यहाँ पे हमें ग्राफ तो इसके बारे में पूछ रहा है, K max वर्सेस lambda. Kinetic range of photo electrons, यहाँ पे maximum kinetic range शायद रहना था. Question should be maximum kinetic range. Then this graph is some sort of like a, it is not passing through origin. So ये वाला तो ruled out. These two are ruled out. Now बाकी बचे so ये दोनों हैं. Then अगर ये phi नहीं रहे तो then this is like a rectangular hyperbola. So यहाँ पे phi है. Lambda 0 not possible. Lambda 0 means it'll become infinity, positive infinity. So therefore this is something the possible graph. Okay, fine. Graph यहाँ से हम pick up कर लेंगे. So our option 3. फोटोवोल्टिक इफेक्ट रिवाइज कर लो एक बार. वेरी सिंपल. बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक आ चुके. लाइक एवरी पेपर देयर इज वन क्वेश्चन. This question based on the velocity of a and the topic name is units and dimensions, experimental physics. The velocity of particle moving on a straight line varies with the time where ABC. Find the dimensions of AB. या तो dimensionless पूछ रहा है. From the principle of homogeneity, V equal to AT square BT plus CT. The dimensions of V should be equal to dimensions of AT square. Dimensions of का V कितना है? L T minus 1. Dimensions का A हमें पता नहीं, so A तो T square है. So the dimensions of A का कितना हुआ ना? L T minus 3. Okay, fine. बाद में the dimensions of C plus T. इसका तो dimensions of C should be equal to dimensions of T. Dimensions का T का dimensions कितना है? Capital T. And B should be the dimensionless. No, so B का dimensions तो L T minus 1 होगा. Again, the dimensions of BT, the dimensions of B should be equal to the dimensions of B. The dimensions of B is L T minus 1. So यहाँ पे multiply करेंगे A B C. A का dimensions L T minus 1. B का dimensions L T minus 1. C का dimensions T. L square T to power of minus 3. Okay, I agree this. There's a dimension. So what is the basic idea? The dimensions from principle of homogeneity. यहाँ पे apply करेंगे. From the principle of homogeneity, the dimensions of this must be equal to this. The dimensions of this must be equal to this, must be equal to this. Next question. At the peak of mountain, the time period of pendulum increases. The time period of pendulum increases with the decrease in G. I think this topic is based on the oscillations or SHM, simple pendulum concept. Then at the peak of mountain, the time period of pendulum increases. So what is the time period of pendulum? Time period of pendulum is given by 2 pi L by G. ये तो value इसका है. So now as height increases, what is the G value? G dash equal to G into 1 minus 2h by r. The acceleration due to gravity increases with height. अगर यहाँ पे हम ग्राउंड ले लेंगे, ये जो माउंटेन है, पहाड़, you can call it, no?
This is the thing. So there's a basic formula सम ये दोनों formulas अगर याद रहे तो little bit easy for you. यहाँ पे हम pendulum है, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे g है, यहाँ पे कितना वैल्यू, like this will be h, this is the ill पहाड़, देन यहाँ पे वैल्यू कितना होगा g डैश, तो g डैश तो कम हो जाएगा ना, like this is h equal to 0, g डैश will be less than g. अगर g डैश लेस देन दिस न्यू टाइम पीरियड कितना होगा t डैश, यहाँ पे अगर पेंडुलम आप सस्पेंड करेंगे इसका टाइम पीरियड तो t डैश, यहाँ पे g डैश है, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है t है, तो t डैश इक्वल टू 2 पाई l g डैश, g डैश जब कम हो जाएगा तो g डैश less than g, so therefore t dash greater than t. At the peak of mountain, the time period of pendulum increases. Correct statement. The time period of pendulum increases with the decrease in g. This is also correct statement. Assertion is correct. Reason is correct. So a थोड़ा formula gravity का भी याद रख लो, will be very useful. Time period of simple pendulum, then the variation of g with height and depth. इतना थोड़ा याद रहे तो it will be very useful for you. I'll take the next question. आप देख रहे हैं लाइक दे आर आस्किंग मोर अबाउट द assertion रीजन, लाइक एक पेपर में दो या तीन पूछ रहे हैं, इससे पहले ओनली वन, दे यूज्ड टू आस्क ओनली वन, एक ही क्वेश्चन था. तो आप 2025 ने जनवरी सेशन में आप अब तक तो 10 पेपर कंप्लीट हो चुका है. तो इसमें जरा देख लो लाइक हर एक पेपर में दो या सम पेपर में तीन है, मिनिमम तो दो दो ही है, दो तो आई है, एक पेपर में तीन पूछ रहे हैं. सो आई थिंक दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक assertion रीजन, तीन क्वेश्चन एंड दैट टू assertion रीजन विल नॉट बी न्यूमेरिकल बेस्ड, ये क्या याद रख लो तुम. तो जस्ट दे आर बेस्ड ऑन सिंपल थ्योरेटिकल एनालिसिस, सिंपल थ्योरेटिकल फॉर्मूला बेस्ड एनालिसिस, थ्योरेटिकल एनालिसिस, और एक मैच द फॉलोइंग पूछ रहे हैं. यहाँ पे दो assertion रीजन, वन मैच द फॉलोइंग, दे आर नॉट न्यूमेरिकल बेस्ड, सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड. सो तीन क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप, देयर 5 क्वेश्चंस, आई थिंक अराउंड 8 रीचेबल. बाकी जो भी सिंगल ऑप्शन में वही टफ क्वेश्चन आ रहे हैं. द स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम शुड बी ऑफ दिस काइंड. ओके सर, असर्शन रीजन के लिए अगर आप तेरी पढ़ोगे तो देन ओनली मैनेजेबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. तेरी मीन्स टीचर नोट्स, जो भी आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करें तो दिस इज मैनेजेबल. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. A negative potential is required to stop photoelectron. Speed of electron decrease when a negative potential is applied in a potential cell. Photoelectric effect basic diagram. ये जो फोटो सेल, बेसिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर याद रहे तो दिस इज वेरी वेरी इजी. दिस इज लाइट इंसिडेंट, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लैम्डा. दिस इज कनेक्टेड, दैट विल बी कैथोड एंड दिस विल बी एनोड. यहाँ पे हम कलेक्ट ऐसे कनेक्ट करेंगे, देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एजेक्टेड. यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एजेक्टेड. A negative potential is required to stop the photoelectron. Negative potential means हम जो like इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप हुआ तो द नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन. ये थोड़ा बड़ा डाल लेंगे डायग्राम. तो कौन सा डायरेक्शन में नाउ,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें अप्लाई करना है इनसाइड द ट्यूब. इनसाइड द ट्यूब द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. देन ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल एक्सपेंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट. Then it will undergo retardation, then it may fail to stop to reach here. So electric field इस डायरेक्शन में अगर अप्लाई करना बोले तो I should make this one as positive, this one as negative. The negative potential is required to stop the photoelectron. I think correct statement. Speed of electron decreases when a negative potential applied to a photocell. Yes, definitely. The electrostatic force, what it does. If you check it, the K will be less than K max. K max क्या है? K max is equal to SC lambda minus work function. So definitely K will be less than K max. यहाँ पे assertion correct, assertion is correct. The reason is also correct. Based on the photoelectric effect. I think it's a very strange, like, deklo, like they're asking from same topic two questions, and that too small topic. I think this is the one more trend in 2025 January में. Like एक ही topic से दो क्वेश्चन पूछ रहा है. This is a very strange, like a approach from the NTA because we have 33 chapters. Instead of asking from each chapter one question, they're accidentally asking like from electrostatics to photoelectric effect 2 questions, units and dimensions 2 questions. तो जो बच्चे ये चैप्टर पढ़ चुके हैं इस लाइक फॉर देम डबल एडवांटेज. दो क्वेश्चन. अगर जो बच्चे स्किप कर चुके दे आर इन लॉस. इट इज नॉट लाइक ए that strategy from NTA because every chapter one question would have been balanced. Okay, as a teacher I had to just expressing my views, not to criticize anybody, just expressing my views. जो भी मैं like paper should be balanced paper. Next we have the question. If electric dipole moment is placed in electric field E with parallel T, but it is rotated slightly and released, find the time period of oscillations. I think there's a very famous oscillations of dipole in an electric field. Oh, you recollect. Huh? Say like I'll really, you go and check your teacher notes. जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं ना, जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हर एक का क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेगा. क्वेश्चन इन सेंस द कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड. हर एक क्वेश्चन का, नॉट इन दिस, maybe 1 or 2 questions, but out of 25, 23 will be available in your teacher notes than any other material, test papers, important assignments, DPPs. तो हम क्या कर रहे हैं, लेके 2 साल से जो तुम मेहनत करते हो, जो साल से हम तुम बैठ के लिखते हो क्लास में, उसी को आप तुम कचड़े में फेंक के जो DPPs, असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पीछे जाके सब बर्बाद कर रहे हो. तो वेरी सिंपल. आई थिंक एवरीवन यहाँ पे तुम फिर अप्रैल अटेंड फिर एक बार ले रहे हो. जिसका अच्छा हुआ, जिसका अच्छा नहीं हुआ, दोनों को वन सिंपल मैसेज, आप टीचर नोट्स ले लो. हर एक प्रॉब्लम जो भी आपका पेपर में है, based on this you are having the discussion is either the concept, theory or the formula. Then what is the simple strategy for April? जाके तुम्हारा नोट्स पढ़ लो. जितना बार होता है उतना बार रिवाइज कर लो, फॉर्मूला से याद कर लो. There's a simple strategy, nothing bigger than this. Okay sir, why you are against anything? See, the one which is useful for exam is what should be given priority. Okay, this is the external E bar and there's a dipole. It is kept in electric field. इसको हम slightly हम rotate करेंगे.
theta. Then what about the torque? Torque यहाँ पे इस तरह आएगा. Torque equal to P bar cross E bar. There's a basic formula है. So PE sin theta. Dipole moment of inertia of the dipole. So ये तो I alpha. Now Y negative sign. अगर आप देख लो ये this is theta. Theta is in anti-clockwise. Torque is in clockwise. So the net torque how it is equal to PE sin theta. Theta very small. Alpha equal to minus PE theta by I. Comparing with the standard equation of SHM. This is a dipole moment. ये तो option 1. Oscillations of dipole. This topic is based on the electric dipole, electrostatics, and very specifically oscillations of dipole. We'll take the next question. In adiabatic process of closed system, work done by gas depends explicitly. What is the meaning of यहाँ पे explicitly? थोड़ा language. Implicitly, explicitly. दो words है यहाँ पे. So little bit very important. Explicit means the one which are directly dependent. Directly. So then basic work done equal to minus delta U. N R gamma minus 1. T final minus T initial. Yes, it depends on this temperature only. Then from ideal gas equation, PV equal to nRT will write. This can also be written as gamma minus 1 nRTI minus nRTF. nRTI will be PI VI minus PF VF. Change in pressure only. Directly means or only. Explicitly means directly means now the work done depends on both pressure volume, not only pressure nor only volume. Change in pressure wrong. Change in number of moles wrong. Change in volume wrong. It depends only on temperature. I think this equation satisfied, no? Sir, यहाँ पे pressure पे depend होता है? No, it depends on pressure volume here. But here it depends only on temperature. Only, the explicitly means only, directly or only. Language, everyone knows. यहाँ पे adiabatic process सभी को पता है. But the meaning of word language explicitly is something very important. अगर आपको इसका meaning पता नहीं तो really some issue in the question, like some issue in the exam. You have to be little bit careful in dealing with such questions where your literature is being tested. Very rare. I think there's the only question I have seen in this January session. Auric thermodynamics. That's what I'm seeing. No, this paper like repeated from same topic two questions. Advantage जो भी बच्चे पढ़ चुके वही टॉपिक में दो क्वेश्चंस. Okay, now it given to 0.5 moles of ammonia at constant pressure. So it's isobaric process. Initial temperature. Find the value of delta U, delta T. Q equal to this isobaric process. In isobaric process, this is a pressure P and volume V, temperature T1, T2. This is a process.
Initial temperature will be 27 means 300 Kelvin. How much of it is given? Q amount of heat. So Q equal to NCP delta T. Heat given. How much of heat given? 500 joule. How many moles? 0. Monoatomic gas CP 5R/2. Change in temperature is asking. R का वैल्यू 8.3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है आपको. Change in temperature is asking. Okay, this is a 1. So यहाँ पे 5 कैंसल हो जाएगा. 1000 5R/2 delta T. So delta T is equal to 2 into 1000 by 5R. 5 1 जा 2 into 200 by R. R का वैल्यू कितना है? 2 into 200 by approximately 8.3 ले लेंगे. 400 by 8.3. Nearest value. Let me use calculator. ये थोड़ा कैमरा. 400 divided by 8.3. 48.12. 193 approximate 48 degrees Celsius. 48 Kelvin. Sorry, 48 Kelvin. Now, change in temperature in Kelvin or degree Celsius will be same. So यहाँ पे 48 is available. Then इसके बाद में delta U पूछ रहा है. So delta U is equal to NCV delta T. 300 joules आ जाएगा. Just verify it. This will be your option. Problem based on thermodynamics, isobaric process. Next we have the when ball is kept under say at a depth 2.5 kilometer, find percentage change in its volume if bulk modulus of water. What is the bulk modulus? यहाँ पे हम there's a ball where it is kept at a depth. Okay, ball. This is the ball. Percentage change in the volume. Volume क्यों change होता है? So because the pressure will increase. अलिए जब when it is there in air, इसका volume तो ज़्यादा रहेगा. Why volume will be more when it is in air? Because what is the pressure force that will act here? Will be only P naught. P naught into A ऐसे रख दीजिए. इसका रेडियस यहाँ पे कैपिटल स्मॉल r कर दीजिए. जैसे बॉल जब ए अंदर चले जाएगा देन यहाँ पे तो प्रेशर इंक्रीज होगा. H at a depth H. Then pressure increase होगा तो definitely what is the pressure here? P naught plus rho GH. Find the percentage change in the volume. So what is the change in pressure? Bulk modulus equal to dP by dV by V. What is dP? dP तो P minus P naught. इसका वैल्यू तो rho GH हो जाएगा. So rho GH by dV by V. So percentage change in the volume. Density of water 1000 ले लेंगे. Then depth 2.5 kilometer, 2500 by 2 into 10 to the power of 9 Pascal. Percentage change. यहाँ पे बहुत सारे like 2 10 to the power of 2 10 to the power of 3 10 to the power of 6. So 25 by 2 into 10 to the power of 3. 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3
2.5 kilometer, 2 into 10 to the power of 9. 10 to the power of minus 3 it will become. So this will become 12.5 into 10 to the power of minus 3 or 1.25 परसेंटेज चेंज इंटू 100 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विल बी 1.25%. What is this topic based on elasticity and this formula? Bulk modulus equal to volume stress by fractional change in volume. Negative sign you'll get confused. That's why I'm not taking that negative sign. Why volume will decrease? Because the pressure will increase here, no? Because here the pressure is P naught. Here P naught plus rho GH. So therefore the volume will decrease. So in fact यहाँ पे R will be less than small r. सर यहाँ पे आप डायग्राम डाल रहे हैं लाइक एग्जाम में इज इट जरूरी है कि ऐसे डायग्राम डाल के करना है? नो नो नॉट नीडेड. मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आपको डायग्राम चाहिए तुम लोगों को समझ पाने के लिए मैं ये डायग्राम डाल रहा हूँ. ऐसे सारे डायग्राम्स यू शुड हैव द इमेजिनेशन. ओ यहाँ पे बॉल एयर में है, इसको हम पानी में अंदर लेके गए तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, उसके प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम स्ट्रेस बढ़ता है. वॉल्यूम स्ट्रेस बढ़ता है. सो देन बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम स्ट्रेस बढ़ने पर इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है. सो देन देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम. दैट्स व्हाई आस्किंग परसेंटेज चेंज. ऑल दिस इमेजिनेशन. या तो मैं लाइक हैव रूटीन लाइक जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आई टेक हेल्प ऑफ डायग्राम सो दैट थोड़ा मैं कम लाइक बोलना चाहता हूँ. सो ज्यादा थ्रू डायग्राम्स आई एक्सप्लेन सो दैट विल बी इजी फॉर यू. मेरा भी कन्वीनियंट है. सो मैं ज्यादा बकने का जरूरत नहीं है. सो एवरीथिंग इज देयर इन द पिक्चर इंफॉर्मेशन. अगला क्वेश्चन. An infinite solid cylindrical wire of radius r carries a current uniformly distributed along its area. This is the wire. ये वाला तो वायर है. देन इसका इसका रेडियस दिस द एक्सिस. फाइंड क्या बोल रहे? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू. What is the topic name? Topic name तो magnetic effects of current. Electromagnetism. Another name electromagnetism. Current carrying wire kept. इसका current कितना flow हो रहा है? यहाँ पे I. This is the I given. ए वाला wire है. This is the axis. Directly will take the this is the our wire. इसका रेडियस कितना है? रेडियस ये होगा रेडियस विल बी कैपिटल आर. द डेटा गिवन. करंट कितना फ्लो रहा है? आई. सो जे इक्वल टू करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे. आई पाई आर स्क्वायर. इसका तो करंट डेंसिटी विल एज्यूम दैट इट्स आउट ऑफ द प्लेन. बाद में यहाँ पे हम विल एज्यूम वन मोर. किधर गया वो? I'll draw it. थोड़ा ये वाला तो कैपिटल आर. दिस इज स्मॉल आर. एक्स ले लेता हूँ. दिस एम्पीरियन लूप. ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज द एम्पीरियन लूप. देन यहाँ पे बी बार विल बी इन दिस डायरेक्शन. Okay, fine. Huh? So then, what is the net current enclosed by it? Current enclosed by it is I. How to calculate that I?
I by pi x square equal to j into, okay, this will be I by pi s square. Current per unit area should be constant. So therefore, I is equal to then B bar dot dl equal to mu naught into I net. B bar and dl. So dl तो यहाँ पे. So what is the angle between B bar and dl? dl तो इस तरफ लेंगे हम. B bar भी same direction है. So angle between them is 0. So this will become B dl cos 0 degree mu naught. What is the net current enclosed? इस सर्कल ऑफ रेडियस x में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I. बाकी सभी इन्हें सिलेंडर ऑफ रेडियस आर द करंट फ्लोइंग इज कैपिटल I. So this will become I x square by r square. Okay, this integral यहाँ पे मिस हुआ ना. B is constant. So this will be integral of dl mu naught I x square by r square. What is integral B dl? Will become 2 pi x equal to mu naught I x square by r square. B is equal to mu naught I x cancel हो जाएगा. Then this will be 2 pi r square. Then what was the question asked? The distance from the center where the magnetic field is equal to mu naught I by 4r. एक काम करेंगे लेके the magnetic field कितना, this should be equal to mu naught I by 4 pi r. तो value of x calculate करेंगे. So this should become x equal to satisfying this. So this will be your answer. So this is the problem based on the Ampere's circuit law, magnetic effects of current, and the subtopic name is Ampere's circuit law. Okay, you can see the complete question like this. There's a basic idea. If you know the formula, what is the magnetic field inside the long cylindrical wire? This formula will be there with you. एक बार check कर लो अपने notes में. Then in exam directly substitute this value, solve it, you'll get it. No need to इतना सोचने का जरूरत नहीं है exam में. Getting no need of this diagram also. Directly आपको पता है what is the magnetic field inside the long wire. Formula रख दो. पूछ रहे at what distance will be this much. B का value यहाँ substitute कर लो, solve for it. I think this won't needed. अब जो भी mains जा रहे हैं, you must know all the theory and all the formulas. Based on that formula, some conditions are there. Take help of that, solve it, and you can manage the paper. There's a methodology for the mains. Huh? Next, we have the topic electromagnetic induction. This question is based on the electromagnetic induction. The two coils have self-inductance. इसका self-inductance कितना है? L1. इसका self-inductance L2. And they have the mutual inductance between them. If they carry current I1 and I2 as shown in figure, then the induced EMF in the coil 1. What is the sense of current? Sense of current is same in both the यहाँ से फिर से I'll draw it. So ये जो diagrams देते हैं ना, so the books they should give like this. This should have been little bit easier. पता नहीं like for students little bit convenient अगर इस तरह दिए तो. The diagram should be like this. यहाँ पे current flow हो रहा है.
I1, this I2. Or the magnetic field now due to the current, इसका self inductance L1, L2, mutual inductance same. Now what is the EMF induced in this coil? What is E1? E1 should be equal to minus L1 di1 by dt. At the same time, E dash, at the same E double dash, this should be equal to minus M di2 by dt. Then what about the E dash and E double dash? Will they be in same sense? Look at this particular, like a current I1. This current I1 will produce magnetic field in what direction? In this direction, B dash. Then you stand anywhere, so we'll stand, यहाँ पे stand हो जाएंगे. It will produce the magnetic field in this direction. At the center, B dash. Then what is the flux? Flux linking should be equal to B dash into area. A1 इसका area A1, इसका area A2. Then what is the flux? अगर I1 increasing, if I1 is increasing, then B dash will also increase, because what is the formula for this? B dash equal to mu naught I1 by 2R1. Let the radius be R1. So if I1 is increasing, if I1 is increasing, B1 increases. If B dash increases, as B dash increases, flux will increase. Then positive flux increases, d phi by dt. Positive. E dash will be negative. Negative in the sense, for him, it will be clockwise. So that induced current, it should be like this, E dash. Then due to mutual inductance, we'll check the direction. This current I2, it will also produce B double dash. It will produce some current. It will produce the current. In what direction it will produce the current? B double dash in this direction. Then as B double dash, now flux due to B dash A1. As current I2 increases, the ideas are like this. As I1 increases, B dash increases. As B dash increases, flux increases. Then from Lenz's law, we are writing. Similarly, as I2 increases, B double dash increases. B double dash increases. So how you can say B double dash? What is the formula? B double dash equal to mu naught I2 R2 square by 2. This distance called x square plus R2 square to the power of 3 by 2. As I2 increases, B double dash will increase. If B double dash increases, then the flux will increase. If the flux increases again, if a positive, this flux will be positive according to Lenz's law. B double dash is out of the plane. Positive flux increases, then d phi by dt positive. EMF induced will be negative. So here what we get here, E double dash will be negative. Negative means it should be clockwise. For whom it is clockwise? Negative means clockwise. Both are negative. Check this one. E dash negative, E double dash negative. So therefore, I should add up these two. Question is really EMF induced in the loop 1 should be equal to E dash plus E double dash. बाद में हम यहाँ पे substitute करेंगे. This is a method. On what basis, sir, you are picking up option 2? Not a concept. It's not a concept. Like you should know the Lenz's law convention. Then based on that, we are picking up this one. A very good problem is testing about the self-inductance and mutual inductance. Why negative for both? This is a method. It's problem based on electromagnetic induction. And the subtopic name is mutual inductance.
or better say inductance. I'll take the next question. In radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is A naught, then find the radius of the second Bohr's orbit of hydrogen atom. I think very, what is the formula? यहाँ पे तो nucleus है, this electron is revolving in the first Bohr orbit, then radius of the second Bohr orbit. Second Bohr orbit तो थोड़ा बहुत दूर रहेगा. This is n equal to 1, n equal to इसका radius कितना? A naught. इसका radius पूछ रहे हैं. What is the formula for Rn equal to n square A naught by Z? For hydrogen atom, Z equal to 1. And second Bohr orbit. Second Bohr orbit means n equal to 2. 2 square A naught by Z equal to 1. 4 A naught. You're asking radius of this one. What is the radius of Bohr orbits? A naught, 4 A naught, 9 A naught, 16 A naught, 25 A naught, 36 A naught. Remember like this. And it also depends on the atom. Hydrogen atom Z equal to 1, helium Z equal to lithium double plus will be Z equal to 3. Helium plus will be Z equal to 2. Now we'll take the next question. Which of the two physical quantities have same dimensions? Torque and moment of inertia. पहले एक काम करेंगे like one momentum and work done. यहाँ से start करेंगे. Momentum means mass into velocity. Work done means force into displacement. They are not same, no? Force, what we can write ma into s. They'll not have same thing. Momentum, we can also write force into times, impulse. So this is ruled out. Impulse and surface tension. Impulse means force into time. Surface tension means force by length. This will be L minus 1. So this is ruled out. Torque and moment of inertia. Torque means R cross F. इसका न्यूटन मीटर होगा यूनिट. Moment of inertia will be mk square or mr square. कौन सा तो ले लेंगे? Then this will be kg meter square. They are not same, no? Naturally, this is our option. Angular momentum का mvr. Planck's constant. Momentum sc by lambda. This h is Planck's constant. और अगर आप atomic physics ले लिए तो this will become nh by 2 pi. This is the thing what is asking us. यहाँ से हम एक काम करेंगे. This is something problem related to units and dimensions. Then he has linked with atoms, both models. Angular momentum of conserve that should be equal to integral multiples of h by 2 pi. N is some integer, will not have dimensions 2 pi integer. So then mvr should be equal to h. Very beautifully asked question है. अगर आपको एक पता नहीं है तो no issue. Eliminating the options, wrong options, you can manage it. We'll deal with the next question. A river is flowing with speed 9 kilometers per hour. Boat is going. यहाँ पे हम river ले लेंगे. This is a river, huh? It's a very rare, no? अब तक जो भी there's a 10 paper they have asked something relative motion. वो भी just river boat में. River is flowing with a speed. How much of speed of the river? VR. कितना इसका 9 किलोमीटर पर आवर.
speed of boat in still water. What do you mean by still water? Velocity of swimmer with respect to river or velocity of boat with respect to river, that only will call still. So here यहाँ पे हम data पहले, and this is VBR, velocity of boat with respect to river, 27 kilometers per hour. A person in boat throws a ball upward, is going downstream. What do you mean by downstream? जब a boat like in the direction of river move हो रहा है, so the river is flowing towards right. अगर a boat भी in the direction of river flow हो रहा है, then we will say downstream. The like जिस तरफ पानी जा रहा है, like जिस तरफ like नदी में जिस तरफ पानी जा रहा है, उसी दिशा में अगर बोट जा रहा है बोले तो then we say it's a downstream. Fine. This is our boat. Velocity of boat with respect to river this much. Velocity of boat we don't know. We'll calculate VBR, VB minus VR. Your entire relative velocity is over either rain umbrella, river boat, river projectile, relative projectile, everything based on this one simple formula. V12 equal to V1 minus V2. अगर जिसको, if you know application of this, it's over. No need to learn anything. You should know how to use this formula. V12 equal to V1 bar minus V2 bar. जब हम रिविजन करेंगे एडवांस के लिए रिलेटिव वेलोसिटी, आई विल टेल यू द मेथड्स. तो वेलोसिटी ऑफ बोट, इसका कितना वेलोसिटी है? 27 i cap. This direction will define xy i cap. Velocity of boat, actual velocity of boat with respect to ground हमें पता नहीं. This will be 9 i cap. 27 plus 9 will be velocity of boat will be 36 i cap kilometer per hour. What is VB? Velocity of boat with respect to ground. Then a person in boat throws a ball upward with a speed 10 meter per second. Find the range of ball as seen by observer at a bank on the river. यहाँ पे एक person, बैंक, इसको हम बैंक बोलते हैं. किनारा, किनारा, नदी के किनारा. यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है किनारे. एंड ऑब्जर्व. यहाँ पे क्या है कि बॉल हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं relative to boat. Then with respect to boat, ये जो ball है ना, so it will go upward and down. With respect to ground, it will move in a curved path. With respect to boat, this ball will go up and down. With respect to ground, this is a boat. Boat तो वहीं पे नहीं रहेगा ना, so it will be moving. We are projecting the ball. We are projecting at a, this is B. Again, it will return back at point A only. But with respect to ground, you check it. Kinare, kinare. Like with respect to kinara means you are at P1. So person is standing here now. Then the ball, what will happen with respect to him? It will move in a parabolic path. There's a path with respect to bank. Path of the ball with respect to bank. So what is the time period? Time period is 2 pi. So like 2 UR by G. 2 into 10 into 10. 2 seconds. What about the range? The range is given by velocity of ball with respect to ground into time of flight. What is the velocity of ball? 36 into 2. We're asking the range. No? Find the range of ball as seen by observer at the bank of the river. And what is the time of flight? Time of flight for 2 seconds. No? We're getting some 20 meters.
2u by g. Check the calculation. Okay, now the calculations. This is the 36. So velocity here I was. I'll write it here. RB equal to velocity of both this one into time of flight. So this will be how much it is 36 time of flight 2. But this 36 is there in kilometer per hour. Time is there in 2 seconds. So we have to convert this into everything is in meter per second. So 5 by 18 into 2. So this will become 2 into 5 into 2 will be 20 meters. There's a range of the ball with respect to ground. It's simple. I explain in detail. You can manage with the basic relative velocity. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Two projectiles were launched from the same position. I think now visible. Two projectiles were launched from the same position simultaneously. Same speed, simultaneously with same speed. One of the projectile was launched and the other at an angle. Find the ratio of maximum height ascended. So what is the maximum height ascended? Formula h1 by h2 equal to u square sine square theta 45 minus alpha by 2g. The other will be sine square 45 plus alpha by 2g. This will become sine square 45 minus alpha by sine square 45 plus alpha. The maximum height ascended depends upon the initial speed of projection. This is h. Generalized formula. This h depends on what? Okay, fine. So sine square will be 1 minus cos 2 times 2 cos 45 will become 90 minus 2 alpha by 2. This will become 1 by 2. इसका simplification होगा cos of 90 2 alpha, so 1 minus, okay, this will become sine 2 alpha. This will become 1 plus sine 2 alpha. I think there's a simple math, just based on trigonometry. We'll wind up. It is थोड़ा ज़्यादा explain कर रहा हूँ. Small ideas only I'll do it. I'll not stretch paper. The problem is based on EM waves. Electromagnetic wave have both energy and momentum. I think this is a general thing, E equal to SC by lambda, and it will possess momentum also, the photons. And what is the momentum of photon? M into velocity. So the momentum, what we can define? So like the momentum we can write E equal to H by lambda. Sorry, momentum of photon H by lambda. So electromagnetic wave is made up of photons, and the photons will have the momentum as well as energy. Rest mass of photon is 0 because any mass, if it is moves with a velocity more than velocity of light, it will possess mass. So otherwise, it should be massless. So therefore, both statements are correct. And just based on theoretical one. We take the next question. Electric field inside the spherical shell should be 0. Electric field inside the spherical shell should be 0. Electric field just outside the spherical shell should be sigma by epsilon naught.
electric field inside the charged parallel plate capacitor should be sigma by epsilon naught. Should also be sigma. So here we'll write down, this will be A. A will be 3. These are all definitions. B will be 2. Electric field inside this also will be 2. Electric field of infinite charge sheet will be sigma by epsilon naught. 3, 2, 2, 1. Okay, the option 2 will pick up. ये वाला हमारा option है. Then even electric field inside the charge plate is sigma by epsilon naught. Then electric field of infinite charge sheet is, this is the formula, sigma by 2 epsilon naught. It's there in notes. जाके open कर लो. It's available in notes or formula book. What all जो भी आपके पास है, all this data is available. जिसको याद है, okay fine, manageable. इसके लिए तुम्हें no need of brain. जब जो भी पढ़े हो याद रहे तो finish. You can manage this exam. A particle is able to complete vertical circular motion with speed at topmost point. Find the ratio of kinetic energy at the topmost and bottom. So यहाँ पे तो definitely we have to project it. This particular topic is based on the vertical circular motion and work per inch. Both ideas are involved. इसको यहाँ पे हम एक velocity project करेंगे. Then applying conservation of mechanical energy, mu square equal to mg 2r plus m, इसको हम v बोलेंगे. This is a basic idea. They're asking kinetic energy at the topmost point. What is the velocity here? M by 2 u square 2 mgr m by 2. V square का value find out करना है. So u square equal to 4gr. V square का value कितना है लगे? n square gr. So this will become 4 plus n square gr. This is a u square. Then ratio of kinetic energy पूछ रहे हैं. So at highest point यहाँ पे a b. At the bottom ka by kb. mu square by 2 m u square by 2 m v square by 2. So u square by v square. U square का वैल्यू कितना है? 4 plus n square gr. V square will be n square gr. This will be your option based on just conservation of mechanical energy. In hydraulic lift, this is based on the fluid statics, fluid Pascal's law. We'll take the hydraulic lift. Area 2-1. This is having area A1, A2. Then force on area F2. No. A2 F1 by A1 equal to F2 by A2. Simple formula based. F1 F1. Then force on area F2 is asking. F1 kitna? 100. 100 by 25 by F2 by A2 by 100. 4 F2 will be 400. This based on the Pascal law. The pressure at this point should be equal to pressure at this point. We are telling that they are at same level. So therefore pressure at this point should be equal to this one. The pressure at this point should be equal to this point. Next one.
Find the magnitude of torque about origin in that direction when force acts at r bar from origin and force is acting at this point. So we have to calculate torque equal to r bar cross f. About origin is asking. इसका z component कितना है पूछ रहे हैं. So r bar will be I cap plus j cap k cap cross I cap minus j cap k cap. इसका expansion I cap j cap k cap 1 1 1 1 minus 1 1 I 1 minus of minus 1 j cap 1 minus 1 k cap minus 1 1. तो टॉर्क का वैल्यू कितना हुआ 2 I cap minus 0 j cap minus 2 k cap. Component of torque. Component of torque along z axis will be 2. X component is 2 Newton meter. Y component of torque is 0. That component of torque is 2 Newton meter. So this will be our answer 2. That component of torque is asking. For a convex lens having U greater than where F is focal length, graph between V and U. I think this particular graph between lengths, what is the length equation? 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. Now graph between where U greater than F, if this is a length. We have kept object, this is a focal length, this is a 2F. We have kept somewhere object here. Then the image will be on this side. If U is negative, V will be positive. Then V versus graph, V versus U. 1 by V. One by V equal to 1 by U plus 1 by F. The V will be FU by U plus F. So this particular graph will satisfy this one. A charged particle Q and mass M is connected with string of length electric field. What will be the time period of small oscillations? There's an electric field. Only electric field है यहाँ पे, बाकी G नहीं दिया है. यहाँ पे पेंडुलम हम सस्पेंड कर रहे हैं. तो QE टेंशन, जब हम इसको डिफ्लेक्ट करेंगे, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. So then electrostatic force Fe will act, and F equal to how much? QE M. Then it will set up a torque. Then Fe into L sine theta should be equal to I alpha. F equal to QE L theta moment of inertia ml square. This will be negative sign because alpha will be like this, theta will be like in this direction. So alpha equal to QE theta by ml. So time period equal to 2 pi ml by QE. This will be time period. Here G is absent. Torque is set up by
only this particular force. This is a pendulum. Is having a charge Q and mass M, so it will experience a force Q into E. Okay, kids, like these are the questions, almost around 24 questions I brought it, I discussed. Paper very easy, and you are supposed to solve many problems. Rather than easy, so moderately easy you can call it. Not something very high level questions asked. Okay, fine. So हम like a second shift का upload कर देता हूँ थोड़ी देर में. Okay, this is about the 29 January shift. The paper is moderately easy, formula based. So यहाँ पे तो like a together 99% and you have to score a little bit more. Fine. Thanks for great support. Okay, kids, like a 29 January shift 1 morning shift paper discussion physics like we have completed. You can see the way the questions are. यहाँ पे electrostatics 2 question, units and dimensions 2, photoelectric effect 2, electromagnetism 2. This is a very rare. Like एक ही chapter में 2 question. So like this is a really like a imbalanced paper. बाकी like what we thought is like हर एक chapter से एक एक question, but it's not like that. तो बाकी बच्चे तो जो शिफ्ट है little bit be alert. जो भी आप chapter पढ़ चुके हैं उससे 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. So it's like a we can't unpredictable like a what we thought हर एक chapter से एक एक क्वेश्चन, but यहाँ पे ऐसा नहीं है. Like एक ही chapter से 2 क्वेश्चन, ऐसा like 4 chapters got repeated. Fine. So we can't do anything. So जो भी पेपर है वो लिखना ही पड़ता है. But those who are preparing for the next shift, you have this all these strategies. Okay, thank you all of you. Thank you for great support. All the best for students who are writing the afternoon shift and the more like the 30th morning and evening shift. Thank you all of you. Jai Shri Mannare. Today we are going to discuss the 29th January, the shift 2 or the evening shift. The paper is moderate and simple, a formula based. And one, you can say the drawback of this paper is like from given chapter 2 questions like that we have the from like a capacitor, ray optics, units and dimensions, then electromagnetic effects of current. Two questions asked. It's a very rare, like I don't know NTA. यहाँ पे like हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछना चाहिए. Like this will be disadvantage for those students who have prepared all chapters और जो by accidentally 4 chapter पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए 8 questions advantage है. Okay, fine. We can't do anything, but as a teacher, like जो भी मैं observed it, I'm just sharing it. So we'll discuss the paper. So we'll get the exact picture. I'll start the paper. Jai Shri Mannarayan Bacho, like we are going to do the paper discussion for the JEE Mains 2025, 29th shift to the evening shift. Like मैं आपका श्रीधर sir, physics teacher. Okay, now the paper is moderate. Paper is moderate and formula based. बल्कि यहाँ 2-3 क्वेश्चन टफ है बट स्टिल मैनेजेबल है. एंड टोटल पेपर अगर आपको अराउंड 176 मार्क्स विल बी फॉर 99 percentile. Total, this is about the total. Consider this will be like a moderate paper. So we'll start the question discussion. A particle of same mass are performing SHM vertical with 2 different spring constants K1 and K2. Amplitude of both is same. Find the ratio of maximum speed of particle. Spring constant यहाँ पे omega 1 equal to K1 by M, omega 2 equal to K2 by M. यहाँ पे हम ऐसे सब सस्पेंड कर रहे हैं. सेम पार्टिकल को दूसरा वाला और एक पार्टिकल उसका मास सेम है
विद स्प्रिंग K2 will suspend. So what is the maximum speed? इसका maximum speed V1 होगा, V2 होगा. What is the formula for V1? V1 to amplitude of both is same. Omega 1 V2 equal to A omega 2. इसका रेशियो पूछ रहे हैं V1 V2. ये तो ओमेगा 1 by ओमेगा 2. Omega 1 angular frequency depends upon spring constant and the mass independent of amplitude. इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे K2 by m root of K1 K2. So this question is based on the oscillations or simple harmonic motion. Okay, fine. So बल्कि questions very easy. जो definitions आपको याद है, so with that you can manage. The angular frequency or time period of oscillation depends only on mass and spring constant. ये तो एक फॉर्मूला हुआ. और बाद में मैक्सिमम स्पीड एट मीन पोजीशन v कोट ए ओमेगा. आई थिंक इससे आपको एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको ये जो मैं ग्रीन में हाईलाइट किया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला एंड मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला, ये दोनों चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. दिस इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशंस. ओके सर, लाइक व्हाट इज द कैसे फॉर्मूला कैसे याद करना है? फॉर्मूला कैसे याद करना है? लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग. ये दोनों दो अलग है. अगर तुम टॉपिक को समझ चुके हो फिर भी भूल जाते हो, दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी है. दो आप टॉपिक को तुम अच्छे तरह से लगे समझ चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर भी व्हाट हैपन, तुम भूल जाते हो. द रीजन फॉर दैट इट इज अ मेमोरी. मेमोरी कम्स बाय प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम थिंकिंग एबिलिटी. दोनों अलग है. यहाँ पे जेई मीन्स के लिए हमें क्या चाहिए, लेके वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड वी हैव टू रिमेम्बर. रिमेम्बरिंग के लिए यू हैव टू रिपीट थिंग्स, रिवाइज. जिसके लिए थिंकिंग एबिलिटी. सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेई मीन्स इजी एग्जाम. नो, जब आप पेपर सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा. एडवाइस देने वाले बहुत सारे देते हैं. ग्राउंड रियलिटी में जब आप पेपर ले लो, सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ के वो लैंग्वेज इंटरप्रेट करके, कॉन्सेप्ट्स रिकलेक्शन, apply them, recollect formulas, solve it, click the option and ये सब 1 hour में. It's not joke. मैं कितना इजी तो सभी को रैंक करता था. तो इसके लिए कांस्टेंट थिंकिंग, लेके डेली 2-3 आवर्स अगर आप पढ़ोगे, देन every day keep some 10 or 15 minutes for the formula recollection. जब आप करोगे तो then you will be in a stable position. These are the methods. Why I'm giving this advice, अब तो जनवरी सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. दे आर सेंडिंग मी, सर मैं क्या करूँ सर, मेरा स्कोर लो है. सो आई आस्क देम ओके कितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? ओके सर सभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है मगर एग्जाम में याद नहीं. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहने से एग्जाम में याद रहना इट्स नॉट ए कंपल्सरी. याद रहने के लिए उसे दोबारा पढ़ना पड़ता है. अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, रिमेम्बरिंग इज डिफरेंट. अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम थिंकिंग एबिलिटी, रिमेम्बरिंग कम्स फ्रॉम डूइंग नंबर ऑफ रिविजन्स. इसको हम हार्ड वर्क कहते हैं रिमेम्बरिंग को. तो जो भी आप अप्रैल सेशन में फिर से दोबारा आप देंगे, not only start reading it again and again. ज्यादा बार पढ़ो. जब तक आप 2-3-4 बार पढ़ोगे, फॉर्मूलास डेली रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली द फॉर्मूलास विल बिकम मेमोरी. बेस्ट एग्जांपल, नेशनल एंथम जन गण मन जन गण मन अधिनायक. कॉन्सेप्चुअली आर वी गुड? उसका डेप्थ क्या है पता नहीं, फिर भी हम वी टेल वेरी लिटरली नो. जब भी किसी को नेशनल एंथम गाओ बोले तो ओके, अपना राष्ट्रगीत गाओ बोले तो हम गाते हैं ना. ओके, अब तो थोड़ा नॉलेज है. ओके, व्हाट इज जनगण मन, दैट वन. जब आप स्कूल में रहे तो उसका कॉन्सेप्ट याद है, जनगण मन. फिर भी आप
याद कर रहे हो, द रीजन इज मेमोराइजेशन. So what is the method is like a the memorization is come by repetition, not by understanding. Okay, I think you got my point here. Like इसके लिए hard work चाहिए. Like, daily you have to revise formulas. Try करो, so that at least if you try now after 1 month you'll be on safer side. At least every April you'll be ready. Hmm? Okay, next question, अगला वाला. मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट पूछ रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स का तो डेफिनेशन फ्लक्स इक्वल टू बी बार डॉट एस बार. इसका यूनिट ऐसा यूनिट वेबर. मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट विल टेक इट एज वेबर. मैग्नेटिक मूवमेंट एम बार इक्वल टू करंट इनटू एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ. सॉरी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहाँ पे आता है तुमने? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इसको एच बोलते हैं ना, तो एच इक्वल टू एन आई. सो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट. तो इसका यूनिट कितना हुआ? एम्पियर पर मीटर. मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटिक मटेरियल कॉन्सेप्ट का, इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल्स. दिस वन. नेक्स्ट. बाद में मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा यूनिट लाइक ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, और ए भी यूनिट यूज करते हैं हम. गॉस. व्हाट इज वन 10⁻⁻⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला. ओके, नॉट नीडेड, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. ओके, ये तो कंप्लीट मैग्नेटिज्म के बारे में पूछ रहे हैं. सो दिस बेस्ड ऑन द व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इसको एच एच को या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं. इट्स कॉल्ड लाइक एच. वेरी गुड क्वेश्चन. जस्ट आस्क्ड अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस एंड सभी कंफ्यूजन है यहाँ पे. मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स. रियली आस्क्ड वेरी सिंपल वे एंड ब्यूटीफुल वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two planets A and B are revolving around a massive star such that RA equal to RB and MA. Find the ratio of angular momentum. यहाँ पे एक स्टार रिवॉल्व हो रहा है. यहाँ पे एक स्टार रिवॉल्व हो रहा है. RA RB. रेशियो, इसका ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा? VA VB. RA इक्वल टू RB, RB इक्वल टू ए वाला तो RA हुआ. दिस विल बी RB. डायग्राम जरूरी नहीं, सो तुम लोगों को समझ, टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे डायग्राम डाल रहा हूं मैं. देन what is the VA, that one? What is the angular momentum? Angular momentum equal to MA VA RA. Find the ratio of angular momentum. Orbital speed formula क्या है? लगे GM RA into RA. This is orbital speed. तो इसको हम MA, mass of the star is M. So angular momentum of planet A. Angular momentum of planet B. MB VB RB. MB
इसका रेशियो ले लेंगे, देन दिस विल बी MA by MB, RA by RB. Mass ratio MA by MB 4√3, ratio of RA by RB ये तो √2 हो. So this will become 4√6. LB by LA होगा 1 by 4√6. The topic is gravitation and satellite, time period of satellite, angular momentum of satellite, energy of satellite, जो भी formulas है अगर आपको याद रहे तो this will be very easy. ये तो आपको पता होगा, angular momentum of revolving planet, about sun or anything, the MVR formula. Problem very simple again. Next one. On increasing the pressure, the volume decreases is more in an isothermal process than in an adiabatic process. Adiabatic process is given by. This problem is based on the thermodynamics chapter. Basic definitions के बारे में पूछ रहे हैं. Adiabatic process में तो this is the basic definition. PV to power of gamma should be equal to constant. I think this is a statement. Reason is true. On increasing pressure, the volume decreases is more in an isothermal process than in an adiabatic process. Increasing pressure. PV यहाँ पे ग्राफ डाल देंगे. On increasing the pressure, or P1 V1 equal to P2 V2, P1 V1 gamma equal to P2 V2 gamma, V2 equal to P1 V1 by P2, V2 is equal to yeah P1 by P2 gamma one by gamma. This will be V1. We'll compare this V2 dash V2 dash को कंपेयर करेंगे. V2 dash equal to P1 by P2. P1 by P2 we can write it as V2 by V1. V2 V2 okay, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. This will become V2 into 1 minus 1 by gamma V2 dash. थोड़ा सिंबल्स मैं अलग ले लेता हूँ. This V0 something और V3 ले लेता हूँ. थोड़ा इजी हो जाएगा. V3 V2 कंपेयर करेंगे. Fine. So V2 by V1 will be P1 by P2 will be V2 by V1. Okay, this is a wala V3. V3 V2 we have to compare. 1 by 1 minus gamma 1 by 1 minus gamma 1. Now V3 is it greater than V2 or less than V2? Gamma to definitely like a will be 5 by 3 greater than 1. Gamma will be greater than 1.
Then if you compare here, V3 will be mathematically less than V2. Sorry, V3 will be greater than V2. So therefore, the volume decrease is more in an isothermal process than in an adiabatic process. वॉल्यूम डिक्रीज V2 के बारे में पूछा, वॉल्यूम डिक्रीज पूछ रहा है. और एक काम करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज डेल्टा V इज आस्किंग V2 minus V1. This should be equal to P2 by P1 minus 1 into V1. Next, V3 minus V1. V3 minus V1 will be P1 by P2. Then this will be P1 by P2. P1 by P2 into V1. So this will be greater than this. V2 minus V1 will be greater than V3 minus V1. Because यहाँ पे power है ना. There's something mass. So even this also true statement. Both are true. ग्राफ में भी कर सकते हैं हम. ग्राफ में भी. So graph will be like this. This isothermal, this adiabatic. Then for increase in pressure, equal change कर लो. Then उसका corresponding change in volume यहाँ पे notice कर लो. So V2 minus V1 will be greater than V3 minus V1. Graphically also you can do it. Next question ले लेंगे. Based on the units and dimensions and mechanics, is asking almost torque, Young's modulus, constant, gravitational constant. जो भी mechanics में जितना भी constant उनके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे. Young's modulus का तो unit pressure है Newton per meter square. Force per unit area N L1 T minus 2 by L square. इसका तो M L minus 1 T minus 2. टॉर्क का तो फोर्स M L1 T minus 2 L1. Quotient of viscosity F equal to 6 pi eta RV. A formula, इससे formula ले लो, it will be very easy for you. Quotient of viscosity will be F by 6 pi RV. F का तो M1 L1 T minus 2 by L1 L1 T minus 1. M L1 T minus 1. Quotient of viscosity. Gravitational constant F equal to Gm1 Gm square M naught square into R square. G equal to Fr square by M square. इसका तो M1 L1 T minus 2 पोस का डिस्टेंस का L square और मास M square. This will be M square. So total this will be इसका डायमेंशन रख देंगे M minus 1
L cube T minus 2. ग्रेविटेशन का तो ये हुआ, कोशेंट ऑफ विस्कोसिटी को ये हुआ, टॉर्क ए वाला है और यंग्स मॉडुलस ए वाला है। पहले एक काम करेंगे, यंग्स मॉडुलस m1l minus m1l minus 1 t2, then torque m1 l square t minus 2, quotient of viscosity m l minus 1 l minus 1, तो l minus 1 t minus 1, बाकी बचे सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी है, दिस वन। सो विल पिक अप ऑप्शन ए। एंड आप देखिए लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशन दो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक पेपर थोड़ा हाईली बैलेंस है। एक ही चैप्टर से दो दो क्वेश्चन और बाकी बचे सो चैप्टर नो क्वेश्चन। कैपेसिटर नो, दो दो क्वेश्चन ही इस पेपर में, दो क्वेश्चन है। The capacitor C1 equal to 6 microfarad charge with a cell EMF iot is disconnected and connected another with which is initial. Find the final charges. पहले एक कैपेसिटर है, it is connected to cell. EMF of cell 5 volt, capacitance कितना 6 microfarad. माइक्रो बाद में will introduce, calculations will become easier. इसका initial charge कितना हुआ, Q naught minus Q naught. Q naught equal to C1 into E, 6 into 5, 30 coulombs. Now इस कैपेसिटर को हम एक काम करेंगे, Q naught minus Q naught, which is initially neutral. कैपेसिटर C2 is neutral है, ए वाला तो न्यूट्रल कैपेसिटर है। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। देन आफ्टर कनेक्शन is asking the final charges on C1 and C2. Okay, charge of these two plates is conserved. कौन सा भी पेयर ऑफ प्लेट्स ले लो, आई एम जस्ट यूजिंग दिस पॉजिटिव प्लेट्स, चार्ज टू बी कंजर्व। यहाँ पे इक्वेशन Q नॉट इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q नॉट का वैल्यू कितना है 30, 30 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देन potentials will be same, they are at same potential of x equal to y, or Vx equal to Va, Vy equal to Vb, तो Vxy equal to Vab, तो Vxy कितना Q1 by 6, Q2 by 12, 30 equal to Q1, Q2 will be 2Q1, Q1 10 coulomb, Q2 का वैल्यू कितना 20 coulomb. This will be your answer. The problem is based on capacitors. Charge redistribution when charge capacitor connected to uncharged or connected to with negative polarity. वो सारे क्वेश्चंस ये सभी पहले पूछ चुके। द सेम थिंग अगेन इन अप्रैल, अगेन दिल रिपीट। इसको एक बार रिवाइज कर लो सभी। Semiconductor, the problem is based on semiconductor physics. Logic gates, subtopic name logic gates. यहाँ पे हमें we have to identify the gate, थोड़ा circuit
बड़ा कर लेंगे. No. We have to bring the equations. This will be A B complement हुआ. A वाला B, this will come A complement. This will be A complement. A तो AND gate है. This one is AND gate. This also AND gate. A जो AND gate है, so the output will be AB complement. This is AND gate. इसका output होगा A complement B. A वाला तो OR gate हो चुका है. OR gate, AND gate, AND gate. इसका आउटपुट x लेंगे, y लेंगे. This will become xy, x dot y, pq, some other symbols. Already y यहाँ पे है. p dot q and p is ab complement dot a वाला a complement b. ये तो और है ना, sorry, और gate. I think will satisfy this truth table. When both are 0, will be 0. When both are 1, will be 0. When 0, 1 will be 1, 1, 0, 1. Exclusive OR, it is a exclusive OR. What is this gate? Next question. paper moderator. Rather than saying easy, let me use one moderator. If two spherical surfaces of radii are having common center, if the object is placed, find the distance between the first images formed by both the surface. So this is about the problem about refraction at spherical surface. थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको वो एक फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस वेरी इजीली. बिना फॉर्मूला आप नॉट पॉसिबल टू वर्कआउट. कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस r/2 and what is the radii of each surface is r. Very nice question. Just based on the formula again. Object is here, so this will be r/2. थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेंगे. You can see this. So यहाँ पे this one. First the ray will be incident on this, will undergo refraction, will form image here. Similarly, the ray will be incident on this surface, will form image somewhere here. Distance between the first images formed. Okay, this will be I1. This will be I2. What all the distances will measure from here? X1 and this will be 2R. And this is X2. Okay, first surface P2 का ले, this is P2, this P1. At P1 ले लेंगे. At P1 कहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे तो यहाँ पे है. इसका एरो ट्रिपल एरो दे देंगे. हम इसको I2 बना लेंगे. I1 ए वाला होगा P1, P2, this will be X2, this X1. पहले refraction at spherical surface at P1. The ray will come, will undergo refraction, will bend. पता नहीं, so just will assume like this. Then where the refractor is present in the medium of refractance 1.5, this is there. So this will be 1.5 minus 1.5. P1 I1 1, P1 O,
I'll write formula, then we'll substitute. By this will be P1C. Towards right is positive. Convention here towards right is positive. Now substitute the value where the refracted is present. What is the formula? Refractedness of medium where refracted is present by image distance minus refractedness of the medium where incident is present by object distance. Then mu minus 1 by P1C. P1C is radius of curvature. This everything will be 1.5 P1I1. P10. P10 will be minus R by 2 equal to P1C will be minus R. 3 by 2 P1I1 plus 2 by R minus 1 by 2R. Minus 1 by 2R minus 2 by R. 3 by P1I1 equal to minus, this will be 5 by R. To denominator में LHS RHS cancel हो जाएगा. So this will be 3R by 5. So P1I1 equal to minus 3R by 5. What do you mean by negative sign? It will be on the left hand side. Similarly, we'll write the refractiveness for P2. At P2, towards left will be positive. So refracted ray, directly let me write the formula. Time not there. P2I2. Incident ray is present in A. P2O 1.5 minus 1 minus R. Or P1C. P2C. So 3 by 2. P2O. P2O will be 3R by 2 minus 3R by 2 minus 2R. P2C will be R, so minus 2R. Three by 2 P2I2. Let's a bit calculations. ये वाला तो 3 minus 7 by 6R. P2I2 will be minus 9R by 7. Now we got the value. और सर यहाँ पे नेगेटिव साइन आप क्या जस्टिफाई करते हैं? Okay, now I think completely visible. Yeah, fine. So what is actually happening? The ray will go here. Instead of bending, it will bend slightly and it will form image here. Similarly, this ray will go here. It will not bend more, it will bend slightly. And it will form image here. He's asking the separation between them. So we'll have the rough diagram. P1, P2 to P2 is this one, P1. Minus 3R by 5. From P1, it is minus 3R by 5. This is point C, center R. P2 will be 9R by 7. This will be minus 3R by 5.
3r by 5, and this will be 9r by 7. Is asking to get the distance. Now total distance, how much it will be? This is r, this r. So P1 plus P2 should be equal to 9r by 7 plus x, 3r by 5. This should be equal to 2r. इसको solve करेंगे, then we'll get this answer. A little bit lengthy, huh? It's lengthy. Question is lengthy. We'll take the next one. Again, see, again, ray optics. There's a problem with this paper, huh? Like, same topic, two questions. Just no ray optics reflects spherical surface. Again, the same refraction sphericals on lens. The focal length of the parts are mentioned L1 and L2. If you divide the focal length, this will become, no, there's a lens is there. Huh? Its focal length is F. When you cut like this focal length will become F, 2F, 2F. Its focal length will remain same. जब आप कट करोगे like this, इसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा. नो, अगर आप इसको इस तरह कट करोगे, फोकल लेंथ विल नॉट चेंज बिकॉज रेडिया विल नॉट चेंज, म्यू विल नॉट चेंज. Then he's asking, so 1 by 2. If you cut normal to the axis, and there's a cutting axis. If it is cut normal to the axis, focal length will get double. If you cut parallel to axis, focal length will not get doubled. Next question. Solenoid is asking about the directly the solenoid. A solenoid of radius carrying current and having total turns magnetic field inside the solenoid. Find the length of solenoid. What is solenoid? Solenoid to like a spring only. It will have a number of turns. The physical length is L. Radius, number of turns, and magnetic field inside the solenoid mu naught Ni. Magnetic field यहाँ पे इस तरह रहता है. The magnetic field will be this will be magnetic field. So what is small n? Small n be number of turns per unit length. तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बी वैल्यू पता है हमें. म्यू नॉट का वैल्यू तो 4 पाई. सो बी का वैल्यू 2.9 into 10 to power of -4. म्यू नॉट विल बी 4 pi into 10 to power of -7. Number of turns 200. Length we have to find out. Current कितना flow रहा है 0.29. Solve for length, we'll get the required answer 8 pi centimeter. लेंथ विल बी इन मीटर, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है. थर्ड क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे. रे ऑप्टिक्स based on the length. If refractive index of the lens is 1.5 in air, जब ये लेंस इट्स इन एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5. ई लेंस को हम इसी लेंस को विल इमर्स इन लिक्विड.
What is the liquid? Liquid का focal length. Its focal length in air is 24 centimeters. तो डेटा गलत लिख चुका हूँ. I'll correct it. This is about the liquid. Then this focal length is 24 centimeters. Refractive index of lens कितना 1.5. Liquid का कितना है 1.33. Find its focal length. हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. न्यू फोकल लेंथ, इसका न्यू फोकल लेंथ कितना है. यहाँ पे हमें रेडिया पता नहीं. तो 1/f1 इक्वल टू म्यू जी बाय 1 माइनस 1/r माइनस 1/r. 1/f1 24 1.51 2/. जब हम लिक्विड में इंसर्ट करेंगे इसका फोकल लेंथ पूछ रहे हैं. म्यू जी बाय 1/r mu L is 1.33 by 2/r. ये दोनों इक्वेशंस डिवाइड करेंगे. ए वाला और दिस वन, दूसरा ए वाला. व्हेन वी डिवाइड दिस टू, f2 by 24 1.5 by 1.33 minus 1 whole divided by 1.5 minus 1. Solving this, we'll get f2 96 centimeter. Okay, fine. Little bit easier. Lens maker formula. अगर ये याद रहे तो it'll be very easier for you. Next one. Three identical particles move under the action of mutual gravitational attractive force. एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं. It'll be easy for me to explain. Yeah. Initially they are on the vertices. Particle कहाँ पे है? These are the particles. And our speed we directed toward the adjacent particle. इसका speed इस तरफ direction है. It's directed like this. Its speed. Triangle of side A. ये वाला थोड़ा काम आ जाएगा हमें. A/2, A/2. Then find net angular about center just before collision. What do you mean by just before collision? What is the net force, net torque about point 2? Will be 0. The net torque will be 0. Since the net torque is 0, so therefore we can conserve the angular momentum. यहाँ पे force of attraction इस तरह होता है. F, 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 ये वाला F, and this is F. What is the net torque about point 2? There's a net torque about point 2 is 0, so we can conserve angular momentum about any point, about point 2 at any time. Before collision, अब जैसे इनिशियल है, जब एक कोलाइड हो रहा है तो जब एक कोलाइड हो रहा है तभी लगे how they move. Actually they move like this. When they're colliding also, what is angular momentum? They'll have same angular momentum at any time t also.
there's a basic idea. और the particles यहाँ पे इस तरह मूव होता है, मूव होते हैं could pass some, because all the time their velocity should be directed towards adjacent particle. थोड़ा relative velocity में तीन तीन particles, अगर तीन particle एक vertices पे है, जो velocity है will be directed towards other particle all the time, then they'll meet at centroid. Based on that only they've asked it. So net torque is zero at any time t. So therefore the angular momentum is conserved about 0.2 at any time t, remains constant. So we'll take the initial one. So this will be the total height of the triangle. पहले calculate करेंगे 60 degrees sin 60. There's a height. ये थोड़ा मैं calculations में जरूरी है. There's a point. We need this h1. Okay, we need this h1. Okay, there's a velocity. So this is 60 degrees. This will be velocity. h1 or call this is h2. So total h कितना sin 60 degree is equal to h by a by 2 sin 60 root 3 by 2 h by a by 2. H equal to root 3 a by 4. So h1 and h2, there will be in the ratio of 1:2. 2:1. Huh? h1 plus h2 equal to h. मुझे h1 चाहिए. This h1 needed. h1 will be 2h2. h2 equal to h1 by 2. h2 equal to h1 by 2. h1 equal to 2h by 3. h का वैल्यू कितना? रूट 3 by 4. So this will become root 3 a by 2. यहाँ पे angular momentum will consider about 0.2 of the particle. Angular momentum of particle will be no. What is the angular momentum? हर एक particle का it'll be same about 0.2. All the particles will have same angular momentum. There are two components will be there. One V perpendicular, other will be V parallel. For all the particles, the conditions will be same. यहाँ पे like एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. इसका वेलोसिटी V perpendicular, V parallel. इसका वेलोसिटी V perpendicular और एक पैरेलल कंपोनेंट. यहाँ पे भी V perpendicular, V parallel. यहाँ पे देख लो नो. तो ड्यू टू V पैरेलल तो 0 होगा. देन इसके लिए हमें क्या चाहिए? h1 a वाला भी h1, a वाला भी h1. V perpendicular, for that this is 60 degree. तो V perpendicular कितना हुआ? V cos 60 degree V by 2. So angular momentum हर एक का particle same रहेगा. So therefore it will be 3 times of m V perpendicular into h1. V perpendicular will be V by 2, root 3 a by 2. So this will become 3 root 3 MVA by 4. Somewhere मेरा calculations गलत है.
कौन सा भी ऑप्शन में है ना. I'll check the calculation. Okay, kids, some corrections I'll make it. Sin 60 will be h by a, will be a by 2. ये तो ओके फाइन. यहाँ पे v by 2, h1 equal to 2h by 3. a का then h value is root 3 a by 2. यहाँ पे एक 2 है. So this will become a by root 3. Then 3m b perpendicular. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे a by root 3. तो a वाला तो root 3 m b a by 2. जो सॉल्व करता है उसी को पता है लाइक व्हाट इज द डिफिकल्टी. आई एम टेलिंग यू दिस वन, गिविंग गाइडेंस वेरी इजी है. ऐसे पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, 10 दिन में करो, 15 दिन में करो, 20 दिन में करो, सॉल्व करो. देन ईच एंड एवरीथिंग आपको कैलकुलेशन तो ये लाइक दिस इज नेचुरल. बोलने में क्या है एडवाइस, दिन भर बोल सकते हैं हम. प्रॉब्लम करो तभी पता चलता है व्हाट इज द फिजिक्स. माय एक्सपीरियंस. ओके फाइन, अगला वाला लेंगे. Next question. A physical quantity is given as if the percentage in A, B, C, D. Okay, then delta Q by Q. This is a simple delta A by A plus or minus 4 delta B by B plus or minus delta C by C plus or minus delta B by D. A में एरर कितना है 2%, B का एरर 1%, C का एरर 2%, D का एरर 1%. तो टोटल कुल मिला के दिस विल बी 9%. सिंपल वन. नेक्स्ट वन विल टेक द एक सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर इज अ कांस्टेंट. सर्कुलर प्लेट, यहाँ पे जो कैपेसिटर है इससे लेके सर्कुलर प्लेट वन मेड अप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट करंट, कितना करंट फ्लो रहा है आई, capacitors and EM waves. The subtopic is find the distance between two circular plates. The potential of the capacitor, potential of capacitor. The potential of capacitor varies as. Find the distance between two circular plates of capacitor. तो यहाँ तो charge Q minus Q. We know Q equal to CV. dq by dt equal to C into dV by dt. तो dq by dt कितना 0.15. ये वाला तो C है. dV by dt 7 into 10 to the power of 8. So C will be 0.15 by 7 into 10 to the power of minus 8. So 15 by 7 into 10 to the power of minus 8. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट. इसका तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम. दिस विल बी 10 to the power of minus 8. फर्दर एफ नॉट का वैल्यू, एफ नॉट वैल्यू 8.85 into 10 to the power of minus 12. डिस्टेंस डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना 10 centimeter, 0.1 whole square, 15 by 7 into 10 to the power of minus 8. Solve for D, will get the answer. या तो रियली कैलकुलेशन देखो कितना है, लाइक 2 minutes करना रियली वेरी बिग इश्यू. हाई स्पीड कैलकुलेशंस नीडेड. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नॉट पॉसिबल. एवरीथिंग कम बाय प्रैक्टिस. मेंस का एवरीथिंग इज कम बाय प्रैक्टिस.
10 डेज में, 15 डेज में, 15 दिन में, 20 दिन में बहुत सारे एडवाइजर्स मिलते हैं आपको. ओके, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस. क्या तो सुनो तुम, क्या तो करो, बिना मेहनत के तुम फल भुगतना चाहते हो, नॉट पॉसिबल. हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस करना पड़ता है. नेक्स्ट वन. आई डोंट वांट टू, यहाँ पे मैं सपने दिखाना, आई डोंट वांट टू मेक यू ड्रीम. वन सिंपल थिंग, जाके पढ़ो बस. एवरीथिंग आप अपने आप को, आपको रिजल्ट आ जाएगा. बिना पढ़े आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन दैट्स ए रियली प्रॉब्लमेटिक, नॉट पॉसिबल. हार्डवर्क करो, देन ऑटोमेटिक अपने आप रिजल्ट आ जाएगा. तुम किसी का इंस्पिरेशन, किसी का help, किसी, नथिंग नीडेड. Three blocks of same mass set in motion as shown. All collisions are elastic. यहाँ पे हमें after all collision velocity of A and B. First A and B will collide. Same mass, elastic collision. They'll exchange velocities. I'll decrease the diagram, size of the diagram. First they'll collide. First A and B will collide. यहाँ पे भी out place. First A and B will collide. They'll exchange velocity. After collision, A का velocity 2 मीटर होगा, B का velocity 5 मीटर होगा. देन C का तो वेलोसिटी 4 मीटर है. बाद में A का वेलोसिटी एज यूजुअल 2. B and C will collide. Exchange of velocity will occur. A वाला 4 होगा. This C will become 5. After all collision, velocity of A, B, C are 2, 4, 2, 4, 5 should be. यहाँ पे तो 4 to 5 है, so this is a wrong statement. Velocity get interchange in elastic collisions of block of same mass. I think this is a correct statement. So statement 1 is false. Statement 2 is true. The topic based on the collisions, conservation of linear momentum. This is a green color. यहाँ पे थोड़ा collisions का idea यहाँ पे use करना है तुमको. In elastic collision, there'll be exchange of velocities of say between same masses. Next one. An electromagnetic wave propagates in x direction, then electric field and magnetic field are directed along YZ direction. The wave is propagating along. This will be E bar, this will be B bar. E cross B. The direction of this is given by E cross B. Basic definition, problem based on EM waves. Because if the wave is propagating along x-axis, the direction of electric and magnetic field should be along y and z axis. We'll take the next question. The graph is shown for 1 mole of ideal gas. 1 mole of ideal gas. Ideal gas. PV graph is shown for 1 mole of ideal gas. Find the total heat supplied to the system. No heat exchange in adiabatic process. Only heat is absorbed in the isothermal process. So Q adiabatic will be 0. Total heat supplied, I'll write like this. Total heat absorbed should be equal to adiabatic plus isothermal. In adiabatic process, 0. In isothermal process, nRT log of final volume. 18 to 10 to power of minus 3 by 16 to 10 to power of minus 3.
1 mole, 1 R का value R, temperature T, log of 8 by 6, 8 by 6 to this will become 4 by 3. This will be your option. Huh? No heat will be absorbed in the adiabatic process and heat will be absorbed in the isothermal process. Last paper, my burden also will come down there क्योंकि my college में है, so like I had to work 9 hours. बाद में आके paper करना थोड़ा little bit stressful. Huh? If sand falls in a conveyor belt moving with a speed v such that dm by dt root v, find out the power required to keep the speed of belt constant. यहाँ पे हम एक बेल्ट ले लेंगे. This is a conveyor belt. Conveyor belt is moving with a speed v. इसके ऊपर सैंड डाल देंगे. तो dm by dt कितना? dm by dt root v is 10. Then we have to calculate the force. Find out the power required to keep. पहले force calculate करेंगे. F should be equal to v into dm by dt. V, so dm by dt is proportional to root v. So this will become v into v to power of 1 by 2, v into 3 by 2, power equal to f into v, v to power of 5 by 2. Power means force into velocity. बिना डायग्राम भी आप like you have to think in this way. हर एक का क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करना इन एग्जाम नॉट नेसेसिटी. Variable mass concept, collisions, after collision last topic, conservation of momentum, variable mass concept, rocket propulsion. We are adding mass to the system. So therefore now the thrust force will be in this direction. यहाँ पे हम external force इस तरह लगा देंगे. Mass is added to system, no? So the thrust force will get added up. Velocity of mass with respect to system. Velocity of mass 0. Velocity Vms will be towards left. So thrust force on the belt like this. External force we have to apply. So therefore now we have to apply even the power also. That's what he's asking. Find the external power. Next question. A cup of coffee takes a time. I think this based on the Newton's laws of cooling. I'll try to avoid, not part of syllabus. JEE, NTA clearly mentioned Newton's laws of cooling, removed, and again is asking. JEE advanced is there. JEE means not there. Out of syllabus. This should be a bonus. I'll try to avoid why to trouble everyone discussing paper. Oh, कितना बड़ा है ना question. Yeah. A dipole is placed such that its axis is perpendicular to an infinite charge sheet. यहाँ पे dipole है. There's a dipole is placed such that its axis is perpendicular to infinite. A वाला charge sheet है. Net torque, net force 0. So what is the direction of electric field produced by this? It will produce E bar in this direction. What is the formula for net torque? Net torque equal to P bar cross E. So PE sin theta. यहाँ पे theta 0. So net torque will be 0. Net force is along
negative x-axis. No, net force will be 0. No, because field produced by E bar will be uniform, and so the field produced by the, it will be uniform electric field it will produce, and the net force on the dipole will be 0. No, ये वाला डायपोल है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, what is the net force on it? F plus F minus, and दोनों इक्वल हो जाएंगे. ये ग्रीन कलर जो लाइंस मैं डाल रहा हूँ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स विल बी 0. So this is a wrong statement. Net torque 0 and potential G का formula U equal to minus P bar dot E bar minus PE cos 0. Stable equilibrium. Correction. Net torque, net force 0. Correct statement. Torque net and both are maximum. Wrong statement. Option 2 pick up कर लेंगे. Good question. Electric dipole. To the correct option, stopping potential is equal to K max. Okay, काम करेंगे. K max equal to SC by lambda minus work function. What is K max? K max equal to E into Vs. So therefore we can write it. No? So what is the stopping potential? Equal to K max by E. This will be our basic or optional. Problem based on Portal effect. Then stopping potential increases if intensity of the incident beam increases. No, wrong statement. Intensity of incident decreases. If wavelength of the incident beam, stopping potential increases. If wavelength of the beam decreases, so this is also wrong statement. Stopping potential will increase if lambda decreases. Lambda increases means this will decrease. So this is also wrong. Photoelectric effect, just basic theory. Find the number of spectral lines formed in a sample of hydrogen atom in which highest orbit of electron is 4. कितना spectral lines? Highest orbit of electrons is 4. So यहाँ पे n equal to 1, 2, 3, 4. कितना ट्रांजिशंस यहाँ पे हमें मिलेंगे? एक तो 4 to 1, 4 to 2, 4 to 3, 3 to 2, 3 to 1. बाद में 1 to 2. कितना स्पेक्ट्रल लाइंस? 6 स्पेक्ट्रल लाइंस. Hydrogen atom, if it de-excites from n equal to 4 to 1, sample is telling. Sample means बहुत सारे atoms रहेंगे, एक ही atom नहीं, बहुत सारे atoms. कुछ atoms make transition from 4 to 1, कुछ atoms ऐसे transition करेंगे 4 to 3, बाद में 3 to 2, बाद में 2 to 1. कुछ atoms 4 to 3 and 3 to 1. कुछ atoms 4 to 2 and बाद में 2 to 1. कुछ atoms like 4 to 3 then directly 3 to 1, और कुछ atoms 3 to 2, 2 to 1. तो इस सैंपल में कितना वेवलेंथ हमें डिफरेंट तरह का वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगे? 6 वेवलेंथ. सो इसके 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं हम. ओके, दिस वन, दिस अबाउट द, ओके, ये तो 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट, द लास्ट पेपर. It was very easy, moderate paper, formula based. So you can see that one. So जो भी like again you are preparing for April shift, what is the method is read teacher notes for April
session for JEE Mains 25 April session. Read teacher notes many times. इससे आपको concept clarity. With this, you will get concept clarity. Revise and memorize formulas. Everything is formula based. Then third one, solve PYQ. Solve last 5 years PYQ. Avoid most important PYQs. Not needed. जो भी क्वेश्चन आता है इट्स इम्पोर्टेंट, उसमें से आप इम्पोर्टेंट नहीं निकाल सकते. जो भी क्वेश्चन हो, इजी या टफ हो, कौन सा भी, जो भी पीवाईक्यू में इट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स ऑल. सो देन डोंट डेंजरस लाइक कुछ पीवाईक्यू करेंगे कुछ नहीं करेंगे, देन इम्बैलेंस प्रिपरेशन हो जाएगा. दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट अगेन बाद में मैजिक मेथड्स. बहुत सारे मैजिशियंस हैं यहाँ पे. I don't want to tell their name, like that like avoid the magicians and their magical methods. 15 दिन में, 20 दिन में, 16 दिन में, तुक्का मेथड, पुट्टा मेथड, nothing will help you. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, not possible. Please, like it's your life. यहाँ पे like not entertainment. It's all about your life, career. Take it very serious. जितना होता है उतना पढ़ लो. अप्रैल जो भी हो चुका है फिनिश होके, नो प्रॉब्लम. स्टार्ट रीडिंग. Okay, thank you all of you. And what is the JEE advanced course? What is the thing? In next video I'll upload it. Okay, thank you all of you. Thanks for great support. Okay, kids, like a 29th January evening shift का पेपर डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हम. पेपर वाज फॉर्मूला बेस्ड. यहाँ पे आप देखिए, लगे आपको जितना फॉर्मूला है, अराउंड 18 क्वेश्चंस को अगर आपके पास फॉर्मूला रहे तो यू कैन मैनेज लाइक दिस. तो बिना फॉर्मूला नॉट पॉसिबल. एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ चुके हैं उसको अगर याद रहे तो रियली वेरी इजी ऑल दिस थिंग. तो जब तक टीचर नोट्स है उसको बार बार पढ़ लो. सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर समबडीज नोट्स. कोई 5 शॉर्ट नोट्स, लाइक शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, 10 लाइन्स नोट्स, 20 लाइन्स नोट्स, कुछ भी फायदा नहीं है. लेके आपके पास आपका टीचर नोट्स है, आपका फॉर्मूला नोट्स है, फॉर्मूला बुक आप बना चुके होंगे. डेली रिवाइज करो. दिस इज द स्ट्रेंथ. देन जो भी मेथड्स आपको है ना, नथिंग इज यूजफुल. आप तो एक्सपेरिमेंट कर चुके लगे 10 दिन में, 20 दिन में, 14 दिन में, 30 दिन में, 50 days, 90 days, this method, that method, this method. No, not possible. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, nothing is useful. So that magics and magicians or magical methods थोड़ा सोचिए. like don't waste your career. तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा. पढ़ने से ही रैंक आ जाएगा. बाकी जो भी है all are no use. Okay, start reading and revise formula, solve PYQ. Simple strategy. जब तक पढ़ोगे नहीं आएगा. देखो सर, लाइक मैंने बोलते लाइक सर एडवाइस, क्या एडवाइस देना है जब तक तुम नहीं पढ़ोगे. बिना पढ़ोगे तुम कितना भी एडवाइस सुन लो, नो यूज. अब जब तक आप नहीं पढ़ोगे, कौन सा भी मेथड अप्लाई कर लो, कौन सा भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, nothing will work out. So no strategies, nothing is there. Just plain reading, revising formula, solve PYQ. Everything will set right. Paper, let it be easy, tough, moderate, lengthy, highly calculation.
you can manage. Okay, fine, bacho. So you have to fight back. Okay, all the best for April session. Thank you very much.